My father's friend suggested. They suggested, okay, fine. I knew Middle East. I don't know. I think Samaya was a student from New Middle East last year, 12th standard. Okay. So, what chapters are done in your school till now? First 4 chapters. Okay, first 4 chapters. I hope it is in the sequence of NCERT, right? Like some basic concepts, structure of atom, periodic classification, and chemical bonding, correct? Yes. Okay, and then only these chapters? And we have done redox reactions. Redox is done, okay. And we're about to complete organic chemistry. Okay, organic chemistries you are about to complete. Okay, fine. So in organic chemistry, they have done IUPAC nomenclature. They have also done isomerisms. They have also done the types of bond breaking, heterolytic, homolytic, then intermediates, inductive effect, mesomeric effect, resonance, hyperconjugation. All of these things are done. No, we started isomerism. So you have started isomerism. Okay, fine. Inductive effect, resonance, hyperconjugation, these things are not done, right? Yes. Okay. IUPAC nomenclature, it is done. Yes, sir. Okay. And are you comfortable with naming IUPAC nomenclature? Yes, no. Are you comfortable with IUPAC nomenclature or not so much? Okay, fine. And what about these first 4 chapters? How much comfortable are you with these chapters? Huma. So no, not Huma. Noha, you can be completely honest with me. Tell me how, like, are you comfortable with chemistry at all, or you're not comfortable? उसी तरह से हम लोग start करेंगे ना? Tell me. Not really. Not really. Except chemical bonding. Except what? Except chemical bonding. Yes. वो भी like complete understanding या तुक्का सही हो जाता है? I have a good understanding of that chapter. And so you have got a good understanding of that chapter. Okay, that's fine. Okay. And did you have any unit test, half yearly, midterm, term 1 recently? Yes. Acha. When was it over? कब हुआ था ये test? Around the first week of October. Can you message me your marks? Message it to Salim, okay? In the Zoom chat. We didn't get our marks yet. And so you have not got your marks yet. How much you are expecting still, or out of how much? Okay. So right now in this batch, we are in middle of isomerism. Okay. We are middle of isomerism. You have missed IUPAC nomenclature, but don't worry. You will be provided with lecture recordings for IUPAC nomenclature, and also, if you have any doubts, we can have some extra classes. Fine, Noha? Yes, sir. And do you have any test that is upcoming test which आपको dates मिले हैं क्या? I have to check. You have to check the home India. Fine. Like if it is, it will be in the end of November, hopefully, right? Or on the first week of November. It can be also end of November. No? End of November.
So in the last lecture, we did till metamers, right? Position isomers is done. Chain isomerism is done. We did till metamers. Okay, fine. Position chain is done. Okay. Write a question. How many structural isomers are possible for, let us suppose we are having C4H8. C4H8. Okay, ध्यान दीजिए. Now, in structural isomers, when they are asking, generally, now whenever you are having hydrocarbons only, there is no functional group, right? There is no functional group. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, C4H8 acyclic. That means we are also not going to consider any of the rings. है ना? Rings we are not going to consider. ठीक है? Because we have not done ring chain isomer as of yet. That is why I am not going to discuss rings right now. But as soon as we do the ring chain isomers, we will be doing the complete structural isomers. Now, please see C4H8. Acha, guys, can I have your cameras on, please, all of you? Rishita, sorry, Harsha, Siddika, Abdul Hamid ka to on hai, Noha. And yeah, focus mode is already on. Harsha, Siddika, and Noha, please have your cameras on. Okay. Siddika, you are here after a long time, I guess. Last class में थे आप, Siddika? अच्छा, शायद थे, लेकिन हमने भेज दिया था आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग देखने के लिए. Right, Siddika? Sir, my device I was there. Okay, fine. ठीक है. So I think last Saturday आप लोग को दिया था. ठीक है. See here guys. First of all, C4H8 में तो आपके पास simply you will have. अच्छा, C4H8 में if you see you will have a double bond. ठीक है. If you see C4H8, alkane has a general formula CnH2n plus 2. Alkene has a general formula CnH2n. All of you know this, yes or no? Please tell me. Rehayana bole, please. You know this, right? Yes or no? Alkene, alkene. Guys, if you are not going to speak, then how it is? Yes, Harsha, Abdul Hamid, tell me. Do you know this? Yes or no? Please tell me. जल्दी बताए ना. Alkene, alkene का general formula. Yes or no? Yes, sir. अच्छा, मरियम अभी आई, अभी आपको पता है. Alkane and alkene, they have a general formula. हाँ, 10th क्लास में किया था आप लोगों ने. जी, बिल्कुल सही. ठीक है. Okay. Yes. Now, if you are having C4H8, that means this is an alkene, right? This is an alkene. So C4H8 can be like this. This is one of the isomers that we can have. Another isomer will be position. Now, these two are what? Position isomers. These two are position isomers. Now, we can also have one more isomers in which we are going to have only 3 carbon chain. एक यहाँ पे आपने double bond लगा दिया. Now you are having a double bond here. ठीक है? Now, are all of you comfortable with these 3 at least? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एक तो आपके पास ब्यूट वन. ठीक है. Now, what else can we have? Is there any other possibilities? Tell me. Is there any other possibility? Acyclic. Okay. You can also have like this, which is going to be cyclic chain. ये इस तरह से हो जाएगा. This is also C4H8, which is also possible. But we are not talking about that. ठीक है. We are only talking about acyclic. So C4H8 will have how many structural isomers? Tell me, guys. These two are what? These two are position isomers. ठीक है. Now, the relation of this isomer with either this one or this one, इन दोनों ही के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? The relationship is chain isomer.
And I hope you can see that 1, 2, 3. If I have a double bond here, then both of these structure are not different. Both of these are same. Yes or no? Please tell me. So can I have your mics on, please, all of you guys? Mariam, Abdul Hamid, Harsha and Siddika. ठीक है. Both of these structures are same. Yes or no? Yes, sir. क्या ख्याल है? Both of these are same. ठीक है. चलिए. Please write these 3 down. इसके अलावा आपके पास will not have anything else, right? We can't have 4 carbons. Like 4 carbons? As a simple. No, sir. Like the last one, but not a double bond. With what? So like this. The chain. Yes, and down. And down. तो ये 4 कार्बन तो हो गई है. 1, 2, 3, 4 हो गया. So we can't have that. देखते हैं ना. C4, how many hydrogens? 1. 12. Yes, sir. Harsha, tell me how many? 10, sir. 10. So it is not going to be an isomer. Okay, sir. Got it? Yep. Similarly, आप लोग ट्राई कीजिएगा. Try to find for. नोहा थोड़ा आया आपको? Yes, sir. ठीक है. Try for this one. C5H10. C5H10. Also देखिए, if you are see this structure and if I talk about this structure, ठीक है? So both of these structure are same. Whatever both of these structure in the box, they are same, है ना? उसका ध्यान रखिएगा. Whenever you are in doubt, try to write the name of the structure, है ना? If the structure name is same, but I try wrongly तो आपने नहीं किया है. छुट्टी है अभी? हाँ, स्कूल में आपकी छुट्टी है? No, sir. कोई छुट्टी नहीं है ना अभी तो. सीधा विंटर वेकेशन मिलेगा जो आपको मिलेगा, राइट? हाँ. Yes. कैसे करेंगे? अच्छा, आपका फुल सिलेबस आएगा या फिर हाफ सिलेबस आएगा फाइनल टर्म में? First 4 chapters came for the first term exam. Okay, but so those 4 chapters will not be there in the final exam. ऐसा है क्या? More. A few chapters are deleted. नहीं, that I completely. उसकी तो बात ही हटा दी, जो डिलीट हो गया. I'm asking, will the first 4 chapter वो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे? Yes, sir. आएंगे, है ना? ठीक है. That's what I was asking. States of matter हुआ है ना? These chapters are deleted. I know that. No school, मतलब कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जो उसको पढ़ा रहा है. And it's a good thing. I mean, in chemistry, it is really good that they have deleted the complete chapters itself. Physics, I think it would get sometimes confusing, right? That कुछ topics शायद deleted है, if I am not wrong. ऐसे ही है, हर्षा, मरियम, in physics? Yes, sir. है ना? थोड़ा confusing होता होगा नहीं physics में फिर तो. Like chapter करते करते बीच में कोई topic deleted है, फिर पता चल रहा है. Yes, sir. Also, like NEET also deleted a few chapters. I mean, कुछ तो उन्होंने भी reduction किया है. So it's good. एक चैप्टर है केमिस्ट्री में P block elements. That is in your 11th standard as well as your 12th. 12th standard is like very large chapter. Too much. If that could be rationalized or if there could make some changes in that chapter, it would be very, very good. Because it is unnecessarily present and it is unnecessarily large.
Sir, should I send you in WhatsApp? Yeah. Those who are done, they will send me the answer on WhatsApp. You guys can have 1 more minute. C5H10. Try to make position isomer, then फिर एक chain isomer बनाइए, फिर उसका फिर से position isomers बनाइए. ठीक है? That will be much easier then. I think I got answer from Mariam. Okay. Mariam और बनेगा. और by the way, आप प्लीज काउंट कीजिए वहां पे it is C5H10 है या नहीं है. ठीक है मरियम? मरियम? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, वो मेक श्योर करें आप कि वहां पे C5H10 ही है. वैसे हर्षा लास्ट क्लास में आइसोमर्स का हुआ था क्या असेसमेंट? No, sir. नहीं ना, ठीक है, इस बार हो जाएगा फिर. Okay guys, 1 minute is over. देखिए here, see here guys. Sir, I am not getting it. सिद्धिका सी माइक एक तो आपको ऑन करना पड़ेगा है ना, otherwise it will be very difficult. First of all, you will first of all make simple C5H10, 5 carbon atoms, 1 2 3 4 5. Then it is going to have a double bond because the formula C5H10, CN H2N, right? So you can have a double bond here. Another possibility in this same chain is you can have a double bond here. Now these are the only two possibilities for the double bonds. Why? Because let us write the name. एक बार ये भी आप चेक कर लिया करें that it is C5H10 or not. So we have C5 and how many hydrogens? 2 hydrogen, 1 hydrogen, 2 hydrogen, 2 hydrogen and 3 hydrogen. So 3 2 5 और 2 2 4 और 1 5 है ना? I think all of you are comfortable with a bit of Hindi. Then here we have 3 1 1 2 3. 3 2 5 और 3 2 5, right? So C5H10 is here also. अच्छा नोहा यहाँ पे देखिए, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया ना, बीच में बड़ा ही दिक्कत हो रहा होगा. नोहा, आर यू कंफर्टेबल विद दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? नोहा, यस सर. पक्का ना? हम 2 3 2 3 जो कर रहे समझ में आ रहा है? यस. चलिए ठीक है, ये बताइए आप, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस कार्बन एटम? ये जो लाल डॉट किया है हमने. यस नोहा, डिफिकल्टी हो रही है थोड़ी, आई गेस, राइट? इट्स नॉट इंस्टेंट. हाँ, टेल मी. Noha, any idea? No, I can't hear you right now. Fair. Now let us try to write the name. So we have 5 carbon atoms. So this will be pent 1-ene. This will be pent 2-ene, right? Now, if you want to draw any other structure with this 5 carbon atoms, and let us suppose आपने यहाँ पे double bond को shift कर दिया ना, that is quite logical. कि लोग यहाँ पे double bond को shift करें. But now the numbering will start from here. 1 2 3 4 5. अब ये क्या हो जाएगा? This will be pent. Still it is 2-ene. So these two structures are same. कुछ इनमें फर्क नहीं है. That means we will have to stop with the 5 carbon chain. जो आपके पास 5 carbon का chain है. That for that we have exhausted all the possible position isomers. Now we will change the chain itself. हम लोग करेंगे 1 2 3 4. 1 2 3 4 and then a 5 carbon atom. Now from here we can start manipulating the double bonds. एक double bond आपने यहाँ पे लगा दिया, right? ठीक है. Then you will have 1 2 3 4. एक double bond. अब देखिए, if you write the double bond here, both of these structures are same. Yes or no? Please tell me. Can you guys see that both of these structures are same? Yes, sir. नाम लिखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा. What will be the name for this? The name will be, this will be 2-methyl. देखिए, you have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. Second carbon पे क्या लगा हुआ है? Methyl लगा हुआ है. And first carbon पे we are having a double bond. In this case 1 2 3 4. The numbering will start from that carbon atom which is nearest to functional group. If not, then unsaturation. Unsaturation है यहाँ पे.
It will start from unsaturation, right? So here also we are having second carbon पे methyl, first carbon पे double bond. So then दोनों में we are having 4 carbon chain. So both of these structures are same. That is why we will not put a double bond there. Where are you going to put the double bond? You're going to put the double bond here now. Then next, what we can do, we can have 1, 2, 3, 4, and a double bond here. Is there any other possibilities? Is there any other possibility in this case? 4 carbon chain of 4 carbon है ना, 4 कार्बन के चेन में कोई पॉसिबिलिटी और आपके पास नहीं बचेगी. नाउ लेट अस राइट द नेम. आपको देखना एक बार चेक भी कर लीजिएगा C5H10 का. इफ यू वांट टू राइट द नेम, दिस नेम विल बी 2 methyl को चेंज करो रे भाई, 2 methyl 1 2 3 4 but 1-ene. This is again 1 2 1 2 this will be 2 methyl हो जाएगा ये, and this will be but 2-ene. ठीक है, and this is going to be 1 2 3. This will be 3 methyl but 1-ene. ठीक है, 3 methyl but 1-ene. Now we can further have 3 कार्बन चेन और उसमें आपके पास एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट? द नियोपेंटाइल वाला केस. और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे. नाउ दिस डबल बॉन्ड और यू आर हैविंग दिस डबल बॉन्ड और यू आर हैविंग दिस डबल बॉन्ड और यू आर हैविंग दिस डबल बॉन्ड. ये सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या है? ऑल ऑफ दीज डबल बॉन्ड्स आर सेम. सो इवेंचुअली ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर वन एंड सेम. So now what will be the name of this structure? This structure के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? We'll have 1 2 3. So this will be 2, 2 dimethyl. The parent is prop prop 1-ene. ठीक है. So for this C5H10, how many structural isomers, acyclic structural isomers we are having? We are having 6 acyclic isomeric structures. Please write this down. Raise your hand once you are done. सिद्दीका, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब बताएं. यस सिद्दीका. Here you have to mix both the things, the chain isomers and the position isomers. Okay, so practice. It would need practice. It's confusing, I understand that, but थोड़ा प्रैक्टिस करें खुद से, थोड़ा ना टाइम लगा के इसको समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है. आपको बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं. यहां से यहां तक को आपको अलग डील करना है. You will make 5 carbon atoms and then you will shift the double bonds. Then you will make the 4 carbon atom वाला. This is isopentyl group ना, तो isopentyl वाले केस में you will have 5 carbon atoms and then you will shift the double bond. ठीक है. और उसके बाद तीसरा होता था, I think ये तो आपको पता होगा ना, C5 में आपके पास when you have 5 carbon atoms, there are 3 different cases that we can have, right? ये हमने किया था ना. We can have pentane, we can have isopentane and we can have neopentane. In isopentane, we can shift the double bond in 2 different places. In isopentane, we can shift the double bond in 3 different places. In neopentane, we can shift the double bond only in 1 place, right? तो कितना हो गया? 3 और 1 4 और यहाँ पे 2 6. ठीक है सिद्दीका, थोड़ा आइडिया लगा कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली? यस और नो, प्लीज टेल मी. ठीक है. मेन थिंग इज दैट यू विल रिवाइज दिस. प्लीज रिवाइज कीजिएगा इसको. ठीक है. Now, I think we did it till metamers. Now, please write functional group isomerism or functional group isomers. I think this is the 5th one or something. Position hua, metamers nahi. This is the 4th one. Okay, fine. Write the 4th one. Functional group isomers. Please write in this. In this case, the molecular formula is the same. Molecular formula should be always same if you are dealing with isomers. Molecular formula is same, but the functional group is different. Functional group is different. Now, for example,
For the first structure we have alcohol and the second structure, ये तो आप लोग को पता है, this structure is what, this is alcohol, yes or no, please tell me. ये क्या Yes, आपके sir. पास, this is alcohol, and what about this one, what is this? बीच में ऑक्सीजन रहता है, क्या बोलते हैं? I think in the last lecture we did it also in the last lecture. हाँ, बीच में ऑक्सीजन रहता है, क्या बोलते हैं इसको? Ethers. Ethers, very good. This is an ether. This is an ethers, right? This is an ether. Very good. Now, tell me what is the formula, molecular formula of this structure? How many carbons do we have in the alcohol structure? Keep your mics on, guys. Keep your mics on. बहुत बातें करनी है अभी तो, है ना? Keep your mics on. Yeah. How many carbon atoms in the alcohol? 2. 2. Very good. C2. How many hydrogens? 5. 6. And 1 6. Yeah, 6. And oxygen. Correct? Yes or no? Yes. C2H6O is the molecular formula, right? What is the molecular formula of this ether? How many carbons? 2 carbon. How many hydrogens? 6 hydrogen and O. So the molecular formula is the same, but the difference is in the functional group. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए. Now in this case, we will have the isomers that are present. The isomers that are present. Functional group जो isomers होता है, किन के बीच में होता है? You will write alcohol and ethers. They have functional group isomerism. You can write examples. आपके पास 2 carbon atom और OH है. And here you have CH3, OCH3, CH3O, CH3. Then, by the way, Harsha, कृष्णा को छुट्टी मिली है क्या अभी दशहरा वगैरह की? Yes, sir. That's, yeah. वो आ रहे हैं क्या? Is No, he sir. going to visit? नहीं, अच्छा ठीक है. Then I will call him because I'm going to Delhi. ठीक है. So in this case, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 और 1 3 कार्बन. कैसा लग रहा है उसको अभी? ठीक सेटल हो गया पूरा? Yes, sir. अच्छा. मतलब अब कॉल आना बंद हो गया उसका? No, sir. He's still calling. नहीं, मतलब ऐसा होता है कभी that you guys call लेकिन वो पिक नहीं करता है? I didn't get you. Sometimes does it happen that you guys call, but sometimes he does not pick it up? Does this happen now? या अभी नहीं हो रहा है? Not yet, sir. Not yet. Okay, fine. ठीक है, तो अभी टाइम है. कि अगर कोई आपका मतलब बड़े भाई या फिर कोई बाहर रहता है और आप कॉल कर रहे हैं और वो आपकी कॉल को नहीं उठाए, यानी कि वो अब वहां का हो गया, like wherever he is, his mind and his heart is not yet at home, not yet still at home, है ना? अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा. तो फेस्ट वगैरह का सीजन आएगा अभी, आई थिंक. जब विंटर्स होते हैं ना, तो दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस में फेस्ट होता है. तो फेस्ट के टाइम उसको फिर मन लग जाएगा पूरी तरीके से. फिर आप कॉल भी कीजिएगा तो शायद वो ना उठाए, बोले अभी हम थोड़ा बिजी हैं, बाहर है, बाद में बात करते हैं. इवन दैट, है ना? ठीक है, चलिए. अल्कोहल एंड ईथर्स, ठीक है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ, बाय द वे, इफ यू आर वंडरिंग, कृष्णा, ही इज ब्रदर ऑफ हर्षा. He was with us in 12th standard. No, he passed out this year only. He got 95 in chemistry. Yes, sir. He got 95 out of 100 in chemistry. Really excellent marks, really. And the girl who is sitting in front of you, she got 100 out of 100 in maths. 100 out of 100 in maths. I mean, it's 100 out of 100 is really exceptional. कैसे लाया था है हर्षा? मेरी बहन है अभी 10th क्लास में. मेरी बहन है अभी 10th क्लास में. बताइए आप हमें, उसको टिप्स देंगे. शी इज गुड एट मैथ. मतलब उसको हमने वैसे मतलब 7th क्लास में 8th क्लास में वैसे रोला के बिल्कुल मैथ्स कराया ना. 7th 8th क्लास में बच्चों को रोना पड़ जाता है मैथ्स, वो तो हम मानते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और उसमें फिर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, वो अगर अच्छे से पढ़ा जाए, इवन इफ यू आर डूइंग एनसीईआरटी फुल एक्सटेंट, तो एक बार आंसू निकल ही जाना है वहां पे, है ना? कि आपके पास -2 अगर ऐसे लिखा है तो इसको हमको करना है -4. लेकिन अगर -2 और -2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हमको करना है +4. तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बच्चा यहाँ पे रो देगा कि भाई हो क्या है मेरे साथ, ये क्या मजाक चल रहा है ना? सो बट शी गेट्स नाइस मार्क्स, लेकिन उसका ऐसे ना थोड़ा सा रह जाता है. दैट शी गॉट दिस टाइम इन हाफ ईयरली शी गॉट 78 out of 80.
तो उसका एक मार्क्स तो उसका सही कटा है, और एक मार्क्स मतलब टीचर ने बस काटने के लिए काट दिया था, बट स्टिल एक मार्क्स उसका कंप्लीटली वो कटा था, एमसीक्यू गलत हो गया था, तो वो हम नहीं चाहते हैं। खैर बी में आप लोग लिखिएगा। बाकी को कैसा मार्क्स आया था भाई मैथ्स में बताएं जरा। इवन दो आई एम ए केमिस्ट्री टीचर, आई रियली लाइक मैथ्स बिकॉज केमिस्ट्री उतनी पुरानी सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री इज वेरी न्यू, और केमिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका, केमिस्ट्री को प्रेजेंट करने का तरीका, केमिस्ट्री का सिलेबस, इट इज स्टिल डिबेटेबल कि मतलब व्हाट किस सीक्वेंस। और मैथ सोचो यार, आर्यभट्टा के टाइम से बीसी, मतलब मैथ इज बिफोर क्राइस्ट से मैथ्स है। That is why maths are also ancient civilizations. What are ancient civilizations? Us Indians and Chinese civilizations. They are excellent at maths. Why? Because मतलब civilization वहां पे इतने टाइम से, तो इतने टाइम से मैथ्स पढ़ा जाए, जब से civilization तब से मैथ्स है, and that is why we are so good at maths. है ना। लेकिन वही अब जैसे केमिस्ट्री वगैरह ना, केमिस्ट्री वगैरह में इवन इन द सीक्वेंस की किस हिसाब से पढ़ाया जाए, दैट इज नॉट, मतलब वो बिल्कुल पक्का तो नहीं हुआ है, उसमें काफी चेंजेस करने चाहिए। बाकी लोग कितना कितना मार्क्स आया था थोड़ा बताइएगा। अब्दुल हमीद, मरियम, नोहा, सिद्दीका, मैथ्स में कितना कितना आया था। हम बाकी लोग को नहीं बताएंगे। हर्षा का अच्छा मार्क्स था तो हमने बताया बस। डोंट वरी, इफ यू गाइस रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड मार्क्स, किसी को नहीं याद, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, हमने डरा दिया। हर्षा के मार्क्स बताए। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं लिखा आपने। सिद्दीका, सिद्दीका इज क्राइंग इन मैथ्स। ओह नाइस मरियम। हमीद को ओवरऑल परसेंटेज याद है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू नोहा? Nuha, do you remember your marks? Is Nuha not here? Nuha यार चली गई लगता है, उसको लगा बीच बीच क्लास में आने का ना बच्चों का। I don't know whether she is here or not. In maths Nuha or overall? In maths. अच्छा in maths, okay fine. So that means आपने maths नहीं लिया है, right? Yes sir. But फिर chemistry में भी maths आ गया लेकिन, है ना। हाँ केमिस्ट्री हम एक बार पढ़ा रहे थे, डेमो क्लास था, एंड आई यूजुअली just remember वो बोला ओके अब्दुल हमीद, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट विद एटॉमिक वेट, है ना। जो लोग आपसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं दे वुड नो, आई स्टार्ट विद एटॉमिक वेट एंड देन आई डू अ न्यूमेरिकल ऑन रिलेटिव एटॉमिक मास। इन द फर्स्ट क्लास सर इसमें भी मैथ्स है सर। she abruptly just said it, like the first question we do is relative atomic mass, right? Or and it is not simple average नहीं होता है वो, right? It is weighted average, like the relative abundance multiplied by the molecular mass plus the relative abundance of second isotope and molecular mass. उसके बाद like सर इसमें भी केमिस्ट्री में मैथ्स कहाँ से आएंगे? Maths will be everywhere. Even though I'm a chemistry teacher, but I really like maths. Maths is I mean अल्टीमेट सब्जेक्ट है, मतलब जो खूबसूरती की इंतहा होती है ना वो मैथ्स के अंदर मिलती है। खैर चलिए बी में, now alcohol and ether these are functional groups, alcohol and ether these are functional group isomers, they will show functional group isomers। तो आपसे अगर कोई बोले ना राइट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो आपको अल्कोहल वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक, अगर आपको ईथर दिया है एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यू हैव टू मेक द अल्कोहल। नाउ राइट नेक्स्ट, aldehyde and ketones, aldehydes and ketones। So in aldehyde, let's suppose you have CHO like this and 3 carbon atoms, and here we have dimethyl ketone, double bond. Okay, now in this case if you look at the molecular formula, we have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon atoms, so you have C3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 3 2 5, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, we have H6 and then we have O, C3H6O, right? Now in this case we have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, C3, here we have 3 hydrogens, and here also we are having 3 hydrogens, so this will be H6 and there is 1 oxygen atom, here we'll be having C3H6O. In both of these cases the molecular formula is same, but the difference is in the functional group। अब यहाँ पे देखिएगा, even in this case also the main chain is prop, here also the main chain is prop, so chain में कोई फर्क नहीं है, the difference is in the functional group itself। B हो गया, C लिखिए जरा। You can have functional group isomerism between carboxylic acid
and esters. And esters. Hansha, did you practice the previous year papers? Practice किया था वो आपने? No, sir. I only did the sample paper by board. Only sample paper, बस एक sample paper. Yes, sir. उसमें कितना आया था आपको जब आपने खुद से किया था sample paper? Sir, it was hard actually. Sample paper was so hard. I mean, I know that. Sample paper even for 12th examination also. अच्छा, आपने additional वाला किया था या जो normal दो sample paper I think CBSE released. There was one normal, एक फिर उसके बाद they released additional question paper for practice. The additional was very, at least for the chemistry, it was very tough for 12th standard. Additional one. आपने कौन सा किया था? I think the normal one. Normal I did one. for Normal one. basic and standard both. Actually, you did basic and standard both. Okay. But also 100%, even though ultimately is hard work, directly or indirectly. Like the paper was comparatively easy. हाँ, but नहीं वो तो फिर सबके 100 आते हैं ना. But also for 100%, I think luck would play a bit of role. Like your mental space, where you are sitting in the examination. कि एकदम पंखे के नीचे तो ठंड लग रही है तो उसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है. बिल्कुल आपके एग्जामिनर के सामने तो एग्जामिनेशन वहां पे ऐसे चुगली कर रहा है ना. दो लोग अगर मिलके बैठे हुए हैं वो बातें कर रहे हैं इधर उधर की. समोसा खा रहे हैं आपके मुंह के सामने, बिल्कुल आपको भूख लग रही है. सो मल्टीपल फैक्टर कम्स इनटू प्ले. आई नो दैट कि थोड़ा सा वहां पे लक आ जाता है. बट हाँ, आई थिंक 95% मार्क्स कैन बी कंप्लीटली एसोसिएटेड विथ हार्डवर्क. हार्डवर्क पे 95 लाया जा सकता है. इसके लिए आपको लक की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी. 95 ऑब्वियसली, मतलब लक इन द सेंस दैट प्योर, अगर बीमार पड़ गए तो आप क्या ही कर सकते हो उसमें, है ना. बट 95% यू कैन have with hard work. चलिए, in carboxylic acid, let us suppose we are having 3 carbon atoms and COOH. And for esters, we will have, let us suppose we have 2 carbon atoms with a double bond. Then we have an oxygen atom, and then we have a CH3 group, right? So this is a ester. This is a ester. Carbonyl carbon, C double bond O, then oxygen, and then we have an alkyl group. If I try to calculate the number of carbons here, it will be 3 carbons. The hydrogen will be 3, 2, 5 और एक 6 and O2. In this case, we are having C3, 1, 2 carbon and third carbon here. Hydrogen will be 6. Here we are having 3 hydrogens and here we are having 3 hydrogens. So C3H6, and here also we can see that we are having O2. 2 oxygen atoms, right? So carboxylic acid and esters. ठीक है ना. हम देखेंगे D part. इसमें we are going to understand a type of naming also. Okay, D part. It is 1 degree, 2 degree, 3 degree amines. We have also seen this in the metamers case. है ना, metamers maybe we have seen this. So in the first case, I will have 1, 2, 3 carbon atoms, and then that is attached with NH2. Then we have 1, 2 carbon atoms, which is attached with nitrogen, which is attached with hydrogen, and this nitrogen is further attached with the CH3 group. Okay, with CH3 group. Then at last we are having, at last I can say we have a nitrogen atom, which is connected with 3 methyl groups. Nitrogen atom, which is connected with 3 methyl groups. ठीक है. Now please see how to name this type of structure. अच्छा, पहले तो इनका ना अगर आप कैलकुलेट करना चाहें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ पे 3, 2 and then here 2 hydrogen, and here we are having 2 hydrogens, right? तो 3, 2, 5 और 4. So we'll have C3, we have 3, 2, 5 and 9, H9, and then nitrogen atom. Right, here also we are having 3 hydrogen, 2 hydrogen, यहाँ पे आपके पास 3 hydrogen, यहाँ पे 1 hydrogen, right? So you have 3, 2 और 1 3, 3, 3, 6 और यहाँ पे 1 3, 9. So here also C3, H9 and the nitrogen atom. There are also 3 carbons, and we have H9 that is very visible, and nitrogen atom, right? So the formula is same, and even though that is in many of the books it is classified under functional group isomers, but it is not really a functional group isomer. All of these functional groups are amines only, but most of the books they classify 1 degree, 2 degree and 3 degree amines in
functional group isomers. Let us try to write the name of this compound. All of these three, इनका नाम क्या क्या होगा? Please see here, guys. Don't write anything now. If I try to talk about functional group, in all the cases we have nitrogen attached with carbon atoms, we will call it amine. This is also amine, and this is also amine. If I talk about the unsaturation, we will have, there is no double bond. It will be AN, this will be AN, and this also will be AN. Now, when I talk about the parent chain is going to be different. Here, the parent chain will be having, let me just switch the background and we can talk about the parent chain. Huh? So in this case, the parent chain is going to be this 3 carbon atoms, right? Yeah, 3 carbon atoms is a parent chain, which will be prop, right? And then here, the parent chain will be 2 carbon atoms. जो ज़्यादा है वही लेना पड़ेगा, right? Prop. So you will have, this is eth. And in this case, आपके पास कोई और choice नहीं है. You can have only 1 carbon atom as the parent chain, and then it will be meth. When we talk about the substituent, in this case, we don't have any substituent. In this case, I have a substituent which is CH3. So I will write methyl is my substituent. In the second case, I have 2 substituent, methyl, and this is also methyl, right? So we have dimethyl as a substituent, dimethyl. Now, the main problem that will come is the numbering, है ना? Numbering की बात जब आएगी, तो देखिए, आपको numbering अगर करना है तो सारे case में amine will be in the first carbon itself, because main chain में this carbon, I will call this carbon as main chain ना, the numbering starts from that carbon atom which is nearest to the functional group. ठीक है, तो ये 1 number हो जाएगा. Here also, हाँ बताएं. In the third one, there are 3 methyls, right? हाँ, तो एक तो आपने पेरेंट लेना पड़ेगा ना, एक तो वो पेरेंट ले लिया हमने. पेरेंट के बाद जो बचा, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप बच गया था यहाँ पे. दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो फंक्शनल ग्रुप और पफ के बाद जो बचता है दैट इज सब्स्टिट्यूट, राइट? Okay, yes. ठीक है. नाउ व्हेन वी ट्राई टू नंबर इट, अमीन इज ऑलवेज गोइंग टू गेट 1 नंबर, राइट? 1 नंबर. अब ये CH3 जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट CH3, इट इज नॉट अटैच्ड टू द पेरेंट चेन. कैन यू सी दैट? ये ब्लू वाले हाइलाइटेड पार्ट से तो अटैच नहीं है. सो हाउ डू वी नंबर इट? क्या नंबर देंगे? कौन से कार्बन पे है? So it is not on carbon atom. So how can we say that it is on carbon atom? We cannot number it. So what do we say? It is attached with N. Nitrogen से attached. तो हम लोग क्या करते हैं? N-methyl. It is dimethyl, and both the methyl groups are attached on N. Then we write it N, N dimethyl. ठीक है? Now, if I talk about the names here, तो नाम लिखने की जब बारी आएगी, तो this name here it would be simply propanamine, propanamine, or propane 1-amine you can write. If I talk about this name, this is going to be N-methyl ethane amine. है ना? 1-amine हम नहीं लिख रहे, but I hope you can understand. It can be 1-amine also, या फिर सीधा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. This name will be N, N dimethyl methane amine. Is this naming clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है, please write this down. अच्छा, Noha, I think this would be new for you, right? This part. Yes, sir. है ना? But I hope you can see like how easy it gets. आपने क्या लिखा? N-methyl ethane amine, है ना? So we identify in one way, और फिर उसको हम लोग लिखते हैं. IUPAC में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग्स आप स्टार्ट करेंगे जब देखना है, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. वी कैन ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा क्लासेस डाउट्स के लिए. ओके Okay, sir. write this down. Raise your hand once you're done, guys.
Mariam is done. What about others? Sadika, Harsha, and Noha. Noha, do you know how to raise hand on Zoom? Yes, sir. What are you using? Windows, phone और लैपटॉप? मतलब विंडोज है, मैक है या फिर एंड्रॉइड है? क्या यूज कर रहे हैं आप? Are you using a laptop? Yes, sir. Alt Y. Press Alt and then Y. Alt Y. प्रेस कीजिए. नहीं हुआ क्या? अगर मैक है तो फिर ऑल्ट नहीं होगा ना उसमें. तो मैक है आपका? Yes, sir. मैक है आपका. मैक में आई थिंक ऑप्शंस वाई कीजिए. ऑप्शंस एंड वाई. हो गया? देखिए, है ना. फिर अगेन इफ यू विल प्रेस ऑप्शंस एंड देन वाई, तो फिर वो हैंड लोअर हो जाएगा. ठीक है भाई, ध्यान रखें. ये विंडोज वाले बच्चे क्या करेंगे? विंडोज वाले बच्चे टू रेज दी हैंड दे विल प्रेस ऑल्ट. प्लस मत करना, ऑल्ट के बाद वाई प्रेस करना. ठीक है. एंड जिनके पास मैक है दे आर गोइंग टू प्रेस ऑप्शंस एंड देन वाई. ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. हम लोगों ने क्या क्या आइसोमर्स किया अभी तक? कितना लिखा था हमने आपको? सो चेन आइसोमर्स आर डन, पोजीशन इज डन, functional group is done, metamers is done, ring chain isomer is left, right? So we'll write ring chain isomers. Fifth लिखिए. Ring chain isomers. What are the ring chain isomers? Please write. Molecular formula is same, but the compound, but one isomer is ring and the other a chain. Yeah, acyclic. Write this down. ठीक है. तो ये तो इसमें आपको ना बेसिकली दिखेगा कब वी विल हैव एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन के बीच में मिलेगा. साइक्लोएल्कीन. ठीक है. जैसे यू हैव 3 कार्बन एटम्स एंड अ डबल बॉन्ड. 3 कार्बन एटम्स और एक डबल बॉन्ड. दूसरा आपके पास 3 कार्बन एटम्स का रिंग. You have a 3 carbon atom ring. In both the cases, let's count the number of carbon atoms. 3 carbons. कितने हाइड्रोजन से जरा काउंट करके बताएं. How many hydrogens guys? बोलो भाई. 7. पक्का 7? देखो फिर से. 3, 1, 2, है ना. क्या भाई, कैसे चलेगा ऐसे काम? हाइड्रोजन नहीं बता पाएंगे. हाँ गाइस, 6 ना. Yes, sir. C3H6. What about this one? Each 6. carbon atom is have C3H6 only, right? C3H6 only. अच्छा, again, let us suppose we have 1, 2, 3, 4 carbon atoms. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. So you'll have in both of these cases. और दूसरा भी क्या बन सकता है इसमें? ठीक है. So in this case you will have C4H8. यहाँ पे भी आपके पास C4H8. यहाँ पे आपके पास C4 and how many hydrogens? 2, 4, 4, 3, 7 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ना. 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे. It will be again 8. C4H8. बात समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir.
So there need not be alkenes, right? मतलब नॉर्मल भी हो जाएगा क्या? So can we ऐसे have भी it alkyne? एल्काइन. Yeah, sir. हाँ Like मतलब isomer. करिए. How many? C3. How many hydrogens? हर्षा. C3H4. अब कैसे बनाए बताइए जरा. I can't have. Sorry, what? It's not possible. ना नहीं हो पाएगा ना. मतलब इसमें फिर एक्सट्रीम केस ये हो जाएगा, लाइक इट विल नॉट बी. अब ऐसे करके अब बनाइए, देखिए इस तरह से. आई थिंक नाउ इट विल बी पॉसिबल. देखिए जरा. दिस इज C3H4 है ना. यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, राइट. दिस ऑल्सो C3H4 है ना. बट इसमें देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म कमिंग इनटू प्ले. दिस इज EN, यहाँ पे YN भी है. ठीक है. सो मतलब बोल सकते हैं इफ दे आर गिविंग एग्जांपल्स, बट एक जो मेन है आपके पास एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन के एग्जांपल है व्हिच यू हैव टू कवर. ठीक है. एंड इसको लिख लीजिए जल्दी. Are you guys, how many people are done? Okay. Noha is done. Abdul Hamid, Sadiqa guys waiting for you. Sadiqa just waiting for you now. Okay. You will write next, sixth one. That is tautomers. ठीक है. सो टॉटोमर्स को ना लिखने से पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए हो क्या रहा है यहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर इंट्रोड्यूस टू काइंड ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होता है इन टॉटोमर्स. इट इज नॉट लाइक आइसोमर्स दो अलग अलग. दे आर डिफरेंट कंपाउंड बट दे ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर. एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल केस. यहाँ पे देखिएगा जरा. In this case, what you will be having, there will be a OH. ठीक है. आपके पास OH होगा and there will be a double bond. The special thing is that the carbon atom which is having OH is the carbon atom which is having the double bond also. ठीक है guys. Now can I say that this part of the compound, this double bond जहां पे आपके पास pi bond जो है आपके पास, that is electron rich. वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है. Yes or no, please tell me. जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 electrons. When you have double bond, there is how many electrons? We have 4 electrons. We have done chemical bonding. Also in chemical bonding, we know that the double bonded electrons are having orbitals like this.
है ना? So they are frankly very away. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. So can I say that they have more electrons? So pi जहाँ पे bond होगा, the pi bond is electron rich. Yes or no? Please tell me guys. माइक ऑन करके बोले भाई. Yes, sir. ठीक है ना? चलिए. Now between oxygen and hydrogen, which is more electronegative? Oxygen. Oxygen. So it will pull electrons from the hydrogen atom, making hydrogen delta positive. Correct? Yes. ठीक है. Now this part here, this is electron poor, and this part here, this is electron rich. So here you have electron, यहाँ पे आपके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है. तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के पास भाग के जाएगा. yes or no? Please tell me. करेक्ट है गाइस? हाँ है ना? कुछ तो बोलो. नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर pi electrons, they will move to the hydrogen atom. Hydrogen has not called them का क्या मतलब pi electrons are there, electron are wave in nature, so electron को जहाँ पे positive charge मिलेगा, delta positive also, if there is partial positive charge, it will move toward that particular direction because negative charges are attracted by positive charges, right? Negative charge is attracted by positive charge. But as soon as these electrons reach hydrogen, hydrogen will say, I already have a bond. मेरे पास तो already bond है ना यहाँ पे. I already have a bond. I have 2 electrons. उससे ज़्यादा मेरे पास क्षमता ही नहीं है because I have only one shell. In one shell, I can hold only 2 electrons. So the incoming electrons, the pi electrons, they will say, okay, fine, then break that previous bond. वहाँ पे तो oxygen तो सारा bond ले ले रहा था तुम्हारा. Oxygen was taking all your electrons. So why you want to bond? Say, okay, that's also fine. So what will happen? This particular bond will break and it will move towards carbon and oxygen. इनके बीच में bond बन जाएगा. And this type of equilibrium will be existing where you will have C double bond O like this. Now the hydrogen is placed here. Hydrogen has got here. ठीक है? Hydrogen has got here. Now if you see all the number of bonds here, आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? You are having 3 bonds. यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन था. ठीक है? Now here you can see all the 4 bonds. Oxygen के पास दो बॉन्ड थे. Oxygen is still having 2 bonds. This carbon was having 4 bonds. It is still having 4 bonds. Now here the previous hydrogen is here and the new hydrogen has incoming hydrogen is here. So all the electrons and everything are completely fine. यहाँ पे कुछ भी ऐसा अजीब चीज नहीं हुआ. But there is a transfer of proton. Proton का क्या हुआ? बस transfer हुआ because of electron rich side and electron poor side के बीच में. Now if you look at this particular compound, this double bond की वजह से ये En है and this OH की वजह से ये all है, right? So this is known as enol. And this is a ketone. Yeah, so इसको बोलते हैं keto. And this type of tautomerism, it is known as keto-enol tautomerism. There are multiple types of tautomerism, but keto-enol tautomerism is the most important and the only one which you have to study. You have to study not because ये syllabus में, because आगे reactions में आने वाला keto-enol tautomerism. Isomers में अगर आप जाके देखेंगे, so isomers में keto-enol tautomerism is not there in your NCERT. Even ring chain भी नहीं है आपके इसमें. ठीक है? तो स्टार्टिंग की जो 4 पढ़ाए थे हमने फंक्शनल ग्रुप तक, वहीं तक है आपके पास. But again, ring chain is also important and also tautomers भी आपके पास जरूरी है. You should know what is happening in tautomers. अच्छा guys, did you guys get what is actually happening in the reaction? ये arrows का मतलब क्या है? Electron rich से electron poor. Then bond का breaking और दूसरे bond का बनना. Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. है ना? ठीक है. Got it? Yes or no? Please tell me. आगे इसमें हम कुछ लिख दें? Should we write here now? If you are done writing. So the reaction can go both ways. हाँ, both ways. Equilibrium exist करता है यहाँ पे. So वही हम बोल रहे हैं, tautomers साथ में exist करेंगे. But this keto form is more stable. Keto form ज्यादा stable होता है enol form से, generally speaking. Until unless there is something which is going to stabilize the enol, keto form को stable माना जाता है ना? Because अगर आप देखिए ये keto है ना, जो keto form, ये ketone है, simple ketone है ना? तो ये keto form जहां पे भी रहेगा, there will be some percentage of enol form.
जब भी आप कीटोन लेंगे तो उसमें कुछ परसेंटेज इनॉल फॉर्म का हमेशा रहेगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी एन इक्विलिब्रियम। ओके, सो प्लीज राइट, यहाँ पे मेन टॉटोमेरिज्म है, बट टॉटोमेरिज्म में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ा, तो विल राइट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म is an equilibrium between and अच्छा एल्डिहाइड भी हो सकता है ना कीटो के फॉर्म में, मतलब कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन with structural isomer called enol form. ठीक है, फिर लेट मी एक्सप्लेन। इन टॉटोमेरिज्म, in tautomerism, there is an exchange of a hydrogen atom between two different atoms.